Okay, hi everyone. So today let's discuss this problem from H.C. Verma. So what it says, a bird while flying takes a left turn. Where does it get the centripetal force from? Okay, तो जब भी bird हवा में होता है and he takes some turn, so he need a force, centripetal force. If a bird is flying in some curved path, so जैसे ही कोई object या body curved path में move करेगा, उसे centripetal force चाहिए रहेगा towards the center of curvature of this path, right? सो वहाँ पे हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए रहता है. नाउ व्हेन द बर्ड इज इन द एयर, उसे कौन प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स? सो देखो, बर्ड काफ़ी स्मार्ट होते हैं, दे नोज एवरीथिंग, दे नो न्यूटन्स थर्ड लॉ. वो लोग क्या करते हैं जब उन्हें टर्न लेना रहता है, सो समथिंग लाइक दिस, वो जब मूव करते हैं, है ना, फ्लाई करते हैं तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल होते हैं, बट जब कर्व लेना होता है सो वो कुछ इस तरह से टिल्ट हो जाते हैं, राइट? इस तरह से कुछ टिल्ट हो जाते हैं एंड दे पुश द एयर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. जैसे हम आगे की तरफ कैसे मूव करते हैं, हमें आगे की तरफ जब मूव करना होता है तो हम ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं. देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन pushes us in the forward direction, and then we can move. The same is the case with the words. They know if they want to take a turn, they need centripetal force. और वो कहाँ से आएगा? By pushing the air. वो लोग एयर को पुश करते हैं in this direction so that the air pushes the bird equal and with equal and opposite force, and that force provide the necessary centripetal force for the bird to take the turn, right? जैसे bird अपने ऊपर कोई force नहीं लगा सकता, that will become an internal force, just like we cannot move by pushing ourselves, है ना, वो internal force हो जाएगा. We need something जिस पे हम force लगाएं in the backward direction, जहाँ पे जिसके opposite हमें move करना है. So same is the case with the words, राइट? दे आर क्वाइट स्मार्ट. वो लोग जहाँ टर्न लेना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में दे पुश द एयर, एंड बाय द पुश फ्रॉम द एयर दे take the turn. Okay, fine, I hope it's clear. If you have any confusion, we can discuss in the telegram. Okay guys, keep working hard. Best of luck for your exam. Bye.